Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Vijana Balava Girivardhari Yatsodanandana Prajajana Ranjana Sodanan Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Vishnupad Paramahamsa Paramahansa Asatavasata Srimad His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Jagatgurus Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Paramahansa Asatavasata Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananti Koti Vaishnavindi Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudev Bhaktivinoda Ki
Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mathura Dhama Ki, Shri Dwarka Dhama Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakta Devi Ki, Samaveda Bhakta Vrinda Ki, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Jagat Guru, Savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki, Ocean of Mercy, Srila Prabhupada Ki, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shri Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namasrityam Naram Chaiva Narottamam Devam Sarasatyam Vyasam Tato Jayam Mudirajat Nasta Praise Bhaktareshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. So, reading from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 9th chapter, text number 7, deliverance of the Yamala Arjuna trees. Tau Dristva Madhira Matau Shri Mandandao Surat Majao Tayor Anugrahartaya Shapam Dashan Idam Jagao Tau Drispam Madira Matau Tau Drispa Madira Matau Srimadan Dao Surat Majao Srimadan Dao Surat Majao Tayor Anugrahartaya Tayor Anugrahartaya Shapam Dasham Idam Jagao Shapam Dasham Idam Jagao Tau Drisva Madira Matau Srimadan Dao Surat Majao Tayo Anugrahartaya Shapam Dashyam Nidam Jagao Tau Drisva Madira Matau Srimadan Dao Surat Majao Tayor Anugrahartaya Shapam Dasham Idam Jagao
Tao Ratmajao Tayodanugrahataya Sapam Dasham Idam Jagao Tandrisva Madira Matao Srimadandao Suratmajao Tayodanugrahataya Sapam Dasham Nidam Jagao Tadvisva Madira Matao Sridandao Matratmajao Atayoranugrahartaya Maharajas. Tao, the two boys of the demigods. Drispa, seen. Madira Matao, very intoxicated because of drinking liquor. Srimadao Andao, being blind with false prestige and opulence. Sura Atmajao, the two sons of the demigods. Tayao, unto them. Anugraha Artaya, for the purpose of giving special mercy. Sapam, a curse. Dasyan, desiring to offer them. Idam, this. Jagao, uttered. Uttered. I said uttered. Uttered means cows, where you milk from. But utter means something different. He's from England, so I have to be careful. You can translate. I don't know if you can translate that. तो ये जो शब्द यहाँ पे आया है ये अटर है, अडर नहीं है। अटर का अर्थ होता है बोलना और अडर का अर्थ होता है जो गौ माता के शरीर का वो स्थान जहाँ से दूध दुहा जाता है। क्योंकि प्रभु जी इंग्लैंड से आए हुए हैं तो मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अंग्रेजी के बारे में। Yeah, this is his language, not mine. They forced it on us. अंग्रेजी उनकी भाषा है, हाँ? मेरी नहीं। Okay, so seeing the two sons of the demigods naked and intoxicated by opulence and false prestige, Devarshi Narada, in order to show them special mercy, desired to give them a special curse. Thus he spoke as follows. अनुवाद, देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Although in the beginning Narada Muni appeared very angry and cursed them
At the end, the two demigods, Nalakuvera and Manigriva, were able to see the Supreme Personality of Godhead, Krishna, face to face. Thus, the curse was ultimately auspicious and brilliant. One has to judge what kind of curse Narada placed upon them. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gives herein a good example. When a father finds his child deeply asleep, but the child has to take some medicine to cure some disease, the father pinches the child so that the child will get up and take the medicine. So in a similar way, Narada Muni cursed Nalukevera and Manigriva in order to cure their disease of material blindness. तात्पर्य, यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने शाप दे डाला, किंतु अंत में नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह शाप अंततोगत्वा शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह का शाप दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काट कर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इसी तरह नारद मुनि ने नलकुवर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया। Om Kyanatimarandasya Kyananchalasarpaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurude Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes with the torch light of knowledge. I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvise Satsunyavadi Pasachadya Satana. So, before I get into the subject matter of this particular shloka and purport, today is the disappearance day of Srila Jagannath Das Babaji and Sri Rasikananda. So, इससे पहले कि हम इस श्लोक और इसके तात्पर्य में चर्चा करें, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि और रसिकानंद प्रभु की तिरुभाव तिथि। So Jagannath Das Babaji, even though he is not in the Diksha part of our Sampradaya, he is part of our Sampradaya. तो हालांकि जगन्नाथ बाबा जी महाराज हमारी दीक्षा परंपरा में आचार्य नहीं है, लेकिन वो हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। Sometimes during periods of time, we will take the instructions from an acharya, and maybe not necessarily the diksha of the acharya. अलग अलग समय अंतराल पे हम अलग अलग आचार्यों से दीक्षा लेते हैं। हो सकता है कि भले वो हमारे दीक्षा आचार्य ना हो, but in order to take that type of diksha, or I'm sorry, to take that shiksha, one must already be a qualified Vaishnava. लेकिन उस तरह की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अलग आचार्यों से पहले से किसी व्यक्ति को एक योग्य वैष्णव होना चाहिए। So Bhaktivinoda Thakur was actually initiated by another person. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर किसी और व्यक्ति के द्वारा दीक्षा प्राप्त थे। And although he was always very respectful for the person, there were some issues that were of concern. तो वो जिनसे दीक्षा प्राप्त किए थे उनके प्रति निश्चित रूप से वो आदर भाव रखते थे,
लेकिन उनके साथ साथ और कुछ विचार थे जो नहीं मिल पा रहे थे। And it is Srila Bhaktivinoda Thakur who uncovered the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, so many of the teachings of the six Goswamis. तो ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और षड गोस्वामी की कई शिक्षाओं को प्रकट किया। So he sought refuge in those who were sharing his realizations on these different shastras. तो वो जो है अलग अलग शास्त्रों पे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। So Jagannath Das Babaji was such a Vaishnava. He was instructing Bhaktivinoda Thakur. तो बाबा जी महाराज ऐसे महान वैष्णव थे कि वे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को शिक्षा देते थे। And Jagannath Das Babaji lived to a very great age. If I'm not mistaken, it's over 120 years, right? बाबा जी महाराज बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, 120 साल से भी ज्यादा। And when he was approximately 110 years old, right in that area, Bhaktivinoda Thakur was uncovering the different Dham pastimes, the different tirthas of the Dham pastimes. तो जब बाबा जी महाराज 110 साल के आसपास थे लगभग, तो उस समय के आसपास श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो नवदीप धाम है, महाप्रभु की लीला स्थलियां हैं, उनको प्रकट करने का अभियान जलाए हुए थे। So Bhaktivinoda Thakur was a scientist. He was a brilliant PhD. He also was the magistrate of all West Bengal. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक वैज्ञानिक भी थे, अद्भुत व्यक्तित्व थे, और उस समय उड़ीसा में जो है वो मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे भी थे, जो बहुत बड़ी इस पोजीशन थी। And still he was doing investigating archaeology, spiritual archaeology of sorts. तो इसके साथ साथ ही वे अनुसंधान खोज में लगे हुए थे कि महाप्रभु के जो लीला स्थली हैं उनको पता लगाया जाए। So he wanted to find by various old maps of the 15th century the location of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Yoga Pith. तो 15वीं शताब्दी के अलग अलग पुराने नक्शों को लेके वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल योगपीठ वो किस जगह पे था। So very elaborate story. He gets maps and charts and histories and everything and all the statement of the Shastras, and he concludes it was born right under this neem tree. He found this neem tree in Sri Mayapur. तो बहुत ही विस्तार से उन्होंने इसका पता लगाने का प्रयास किया, नक्शे लिए, चार्ट लिए, इतिहास को देखा, शास्त्रों का वाक्यों को समझा, और उसके बाद इस सिद्धांत पे आए कि ये जो नीम का जो पेड़ है ये उसके नीचे ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। So Jagannath Das Babaji, being his Siksha Guru and also being a Nitya Siddha, an eternally liberated soul, had the not only material vision but spiritual visions of all things around him. तो बाबा जी महाराज एक उनके शिक्षा गुरु भी थे और साथ में एक सिद्ध मुक्त पुरुष थे। तो न केवल मतलब आध्यात्मिक भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि जो है उनकी बहुत ही ज्यादा विकसित थी। So he was so old he could barely walk. लेकिन इतने वृद्ध थे कि चलना फिरना उनके लिए संभव नहीं था। And there's pictures of him. See, he's hunched over. His back is kind of arched like that. और आप देखेंगे उनकी कमर जो है मुड़ी हुई है, पिक्चर में आपने देखा होगा जो छवियां हैं। And they used to carry him in a large basket. और उनको एक टोकरी में बिठा के कहीं ले जाना पड़ता था। Someone in the front and someone in the back, and they would carry him.
कोई आगे पकड़ता, कोई पीछे डंडी को पकड़ के टोकरी में उनको लेके जाते। So he was chanting japa, and they were carrying him to this point. They had to cut through the jungle and so forth, and they came to this point of Yoga Peeth. तो फिर उनको जो है जगन्नाथ बाबा महाराज को टोकरी में बिठा के जंगल के रास्ते रास्ते उस स्थान पे लाया गया जहां पे योगपीठ था। And when they found this spot of Yoga Peeth, Jagannath Das Babaji leaped up in the air. They say 5 or 6 feet, leaped, almost like levitated up, jumped out of the basket and started dancing in ecstasy. और जैसे ही योग पीठ पे आए तो बाबा जी महाराज ने टोकरी से छलांग लगाई, 5-6 फीट की छलांग लगा दी, और वो आनंद में वहां पे जो चलना फिरना संभव नहीं था वहां पे नाचने लगे। Bhaktivinoda Thakur was convinced this is the location of Sri Chaitanya's Mahaprabhu's Yoga Peeth. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को उस समय दृढ़ विश्वास हो गया कि यही जो जगह है यही चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है। So that's how Yoga Peeth was found. That's one of the pastimes of Jagannath Das Babaji, which is very, very important. Shri Shri Radha Madan Mohan ki Jai. Shri Balaram ki Jai. So, तो ये जो लीला है बाबा जी महाराज की, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Now, Rasikanandan is a personality that came after Lord Chaitanya, like the first generation of devotees after the departure of Chaitanya Mahaprabhu and his immediate associates. तो रसिकानंद प्रभु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के तुरंत बाद ही आए, मतलब वो उस पहली पीढ़ी में हैं जो पंच तत्व और उनके जो पार्षद थे उनके जाने के जस्ट बाद प्रकट हुए। He was actually the son of a king. He was from a very wealthy family. वास्तव में एक राजा के पुत्र थे और बहुत ही धनी परिवार से भी थे। But he was a Rajarshi. लेकिन वो एक राज ऋषि थे। So he took shelter of Shamananda Prabhu, who was a contemporary of Lord Chaitanya. तो उन्होंने रसिकानंद प्रभु ने श्यामानंद प्रभु जी का आश्रय ग्रहण किया जो कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। And Shamananda Prabhu made him head pujari of Govindaji temple. तो श्यामानंद प्रभु ने उन्हें गोविंद जी मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया रसिकानंद प्रभु को। And he raised the level of deity worship to the highest pinnacle that it has ever been. और रसिकानंद प्रभु ने विग्रह सेवा के स्तर को इतना जितना ऊंचा हो सकता था वो सर्वोत्तम स्तर तक लेकर आए। So after many years of being the head pujari at Govindaji temple, Shamananda Prabhu said, now Bhagavat Dharma or Bhagavat Marg. And now you must go out and preach. तो इस प्रकार जब काफी वर्षों तक प्रचार और विग्रह सेवा करते रहे तब श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु से कहा कि अब आप जाओ और प्रचार करो। So nicely we have here in ISKCON Ujjain the highest standard of Pancha Aktriki deity worship. उसी प्रकार हम ISKCON उज्जैन में भी यहाँ पे देखते हैं कि विग्रह सेवा पांचरात्र की विधि का बहुत ही उच्च स्तर भक्तों ने स्थापित किया है। But we're not meant to just be the enjoyers of feasting our eyes on the deities all the time. लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि विग्रहों का दर्शन करते करते उनके दर्शन का केवल आनंद ही हम लेते रहें। We want to get other people to come and feast their eyes on the deities. हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी अवसर मिले कि वो भी नेत्र उत्सव मतलब भगवान के दर्शन करके आनंद प्राप्त करें। Because when you place your eyes, you gaze upon the beautiful form of Radha Madan Mohan,
then you won't have to gaze your eyes on material forms ever again. क्योंकि जब आप राधा मदन मोहन के सुंदर रूप को निहारते हैं तो आपको इन भौतिक जो रूप हैं इस संसार में उनको निहारने की या दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती. So Rasikananda was sent on traveling Sankirtan. तो रसिकानंद प्रभु को ट्रेवलिंग संकीर्तन में भेज दिया गया. Who? Anyone here Sankirtan? Raise your hand. कोई है संकीर्तन के भक्त हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, बस हाथ उठाइए. Very good. बहुत अच्छा. We're all Sankirtan devotees. Who chanted Hare Krishna during the Kirtan today? हम सभी तो संकीर्तन भक्त हैं. आज कीर्तन में किसने हरे कृष्ण मंत्र गाया? हाथ उठाइए. Okay, that is Sankirtan. तो वो तो संकीर्तन ही है. It's really funny. I tricked you there. हाँ, मजे की बात हो गई. You know, I was in. Go ahead. उल्लू मैंने आपको ठग दिया. प्रभु जी इस तरह बोल रहे हैं. So, one time I was in Srila Prabhupada's room, and I was standing by his bed while he was being massaged, and Prabhupada looked over at me, and there was some devotee who was chanting. He was having like a bhajan. He was singing Hare Krishna. तो मैं एक बार श्रील प्रभुपाद के कक्ष में था और उनको मसाज कर रहा था और उस समय श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा और कुछ भक्त वहां पे थे जो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे. I was chanting japa. और मैं जो है जप कर रहा था. And Srila Prabhupada looked over at me and said, Sankirtan. तो प्रभुपाद ने मेरी ओर देख के कहा संकीर्तन. And I was surprised that Prabhupada was even speaking to me. तो मुझे आश्चर्य तो पहले ये हुआ कि प्रभुपाद मुझसे बात भी कर रहे थे. And I said, oh, yes, Srila Prabhupada, I'm a Sankirtan devotee. I'm the Sankirtan leader in Detroit and I distribute books every day. मैंने कहा हाँ प्रभुपाद मैं संकीर्तन का ही भक्त हूँ. डेट्रॉइट मंदिर में मैं पुस्तक वितरण का एक नेतृत्व करता हूँ. हर दिन पुस्तक वितरण करता हूँ. And Prabhupada said, no, Sankirtan. He chants and you respond. Sankirtan. तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं संकीर्तन कि ये जो कीर्तन कर रहे हैं ये कीर्तन करें उसके पीछे आप कीर्तन भी करो. So then I was like, oh, yes, sure. And I got down and I chanted with the person. So that's what Sankirtan means. But now here, go ahead. तो फिर मैं सोचा ओ अच्छा श्रील प्रभुपाद. तो मैंने जब को रोक के फिर जो कीर्तन कर उनका बैठा और उनके साथ साथ कीर्तन में सम्मिलित हुआ. Shravanam Kirtanam. You're listening and someone is chanting. तो है श्रवणम कीर्तनम. आप सुन रहे हो कोई कीर्तन कर रहा है. Then you chant and they listen. फिर आप कीर्तन करो और वो सुन रहे हैं. Then you control this wicked mind. That's the way you control it. Through hearing and chanting. Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtanam. इस तरह आप इस दुष्ट मन को नियंत्रित कर सकते हैं. श्रवण कीर्तन के द्वारा. So, anyway, so Rasikananda was told to go out on traveling Sankirtan, and he did it for the next 40 years. 40 years he went on traveling Sankirtan. तो रसिकानंद प्रभु कहा गया आप जाइए प्रचार करने के लिए ट्रेवलिंग संकीर्तन में और 40 साल तक वो प्रचार में लगे रहे बिल्कुल. And he was very expert at getting people to chant Hare Krishna and converting them to Vaishnavism. और वो बहुत ही दक्ष थे कि किस तरह लोगों को प्रचार करके हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करवाया जाए और उनको भक्त बना दिया जाए. Because he was the son of a king, he was able to speak directly to pious royal families. He could speak to other kings and princes. There's no problem. तो चूंकि वो एक राजा के पुत्र थे इसलिए वो जो बड़े बड़े राजसी परिवार थे उनके साथ वो बातचीत संपर्क कर पाए क्योंकि राजा के पुत्र दूसरे अमीरों से बातचीत कर ही सकते हैं. And he would
convert them to Vaishnavism. और उनको जो है वो वैष्णव बना दिए. And he would also convert Muslims to Vaishnavism. मुस्लिमों को भी वो वैष्णव बना देते थे. And outcast, चंडाल, agnostics, अब उपद्रव करने वाले, atheists, नास्तिक, atheists. And he even converted wild animals to और Vaishnava. यहां तक कि जंगली जानवरों को भी उन्होंने भक्त बना दिया. So one day he was in a village and these elephants started going crazy. एक बार रसिकानंद प्रभु एक गांव में थे और वहां पे जो हाथी थे वो पागल होते दिख रहे थे, पागल होते जा रहे थे. And they started storming into the village, coming straight for Rasikananda. और वो सब गांव में घुस गए, तबाही मचाते हुए वो रसिकानंद प्रभु की ओर ही बढ़ रहे थे. And they were using their trunks and after Rasi, like, we're getting you. और उनको मारने के लिए, हम तुम्हें मार देंगे, इस तरह आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे. Rasikananda stood on a mound and with a big pot of water just started throwing water on the elephants. रसिकानंद प्रभु एक पत्थर के ऊपर चढ़ गए और वहां से पानी जो है वो उन पे फेंकने लगे हाथियों के ऊपर. And he chanted, Gauranga, Gauranga, गौरांगा, गौरांगा, Krishna, Krishna. कृष्णा, कृष्णा, So, और इस तरह बोलने लगे. so then, he did it several times and the elephants stopped and bowed their heads. इस तरह बहुत बार उन्होंने कहा और पानी छिड़का, सब हाथी जो है रुक गए और उनके चरण कमलों में झुक गए. And they started chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. और हाथी भी हरे कृष्णा इस तरह बोलने लगे. Haribo. Rasikananda Prabhu ki जय. So, back to our story here, and in the Bhagavatam, so Managriva and Nalakuvera, they're getting this direct mercy of Narada Muni. तो हम अपनी भागवत चर्चा में फिर से आते हैं. नलकुवर और मणिग्रीव वे दोनों नारद मुनि की प्रत्यक्ष कृपा को प्राप्त कर रहे हैं. See, material attachment is a form of insanity. भौतिक आसक्ति जो है वो एक तरह से हमारी दुष्ट पागलपन का प्रतीक है. Just imagine Narada Muni is capable of traveling throughout the universe and even to the spiritual world. नारद मुनि जो हैं, आप सोचिए वो इतने योग्य हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी कहीं जा सकते हैं. Who would like to meet Narada Muni? कौन चाहेंगे नारद मुनि से मिलना? Okay, let's see who does. Oh, he doesn't. You don't want to. No, आप नहीं मिलना चाहते हो क्या? You don't want to see Narada Muni. नारद मुनि से नहीं मिलना चाहते? हाथ उठा दीजिए. Love catching you guys like that. ठीक है, ठीक है. So here they come. What? I mean, billions of births, you get a chance to meet Narada Muni. तो यहाँ पे इन लोगों को मौका मिल रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपको मौका मिलता है कभी नारद मुनि से मिलने का. And what do? They're drunk. और वो कर क्या रहे थे? पिए हुए थे. And they're naked. और नग्न थे. I mean, I don't know how much more offensive they could be to a pure devotee. मुझे समझ नहीं आ रहा इससे ज्यादा और क्या अपराध वो कर सकते थे एक शुद्ध भक्त के प्रति. Even Hiranyakasipu wore his clothes when he saw Narada. हिरण्यकश्यपु भी जो है वो कपड़े पहने हुए था नारद मुनि के सामने. So different people, they have different inclinations, and there's an old Prabhupada told a tale about 4 people: a king, a brahmachari,
a butcher and a Vaishnava. तो अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। श्री प्रभुपाद जी हमें एक कहानी बताते हैं, एक राजा, एक ब्रह्मचारी, एक वैष्णव और एक कसाई। So to the king, the sage came forward and he said to the king, "O king, never die." तो राजा के पास जो है एक साधु हैं, चारों के पास जाते हैं। तो राजा के पास जाके वो कहते हैं, हे राजा, आप कभी, आपकी मृत्यु ना हो कभी। And then a brahmachari came up to him and the sage said, "Die immediately." और जब ब्रह्मचारी उनके पास गए तो ब्रह्मचारी को बोला, अभी तुरंत ही मर जाओ तुम। Then some butcher came up, so ghastly, right? Hanging his cleaver on this, terrible. And he said to the butcher, "Don't die and don't live." और फिर एक कसाई उनके सामने आया, तो साधु ने कसाई को कहा, तुम न तो जियो और नहीं मरो। And so the Vaishnava came up and the sage said, "You can live or you can die. It doesn't matter." और फिर वैष्णव जब सामने आए तो साधु ने उनसे कहा, आप जीवित भी रह सकते हैं और मरे भी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। So for the king, never die. That's like Mani Griva and Nalakuvera. They're living very sinful lives. They're trying to enjoy, and in the course of their actions, they give up the regulative principles of freedom. So he says, you're living this enjoyable life, you never die. Hopefully you'll never die. तो यही जो राजा को कहा कभी मृत्यु ना हो, तो यहां देखते हैं नलकुवर मणिग्रीव उसी हालत में है कि वो भोग करने में लगे हुए हैं और उसमें वो नियमों को भी तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो जो हैं अभी तो भोग कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, इसलिए उनको कहा कि अभी आप मरो नहीं। But the problem is everyone dies. लेकिन समस्या है कि मृत्यु तो सभी की होनी है। So even though, and when the king dies, what you take with you in this life, and when everyone dies in the world, they will take none of their cars, none of their computers, none of that technology will save you from death. None of your opulence, none of your discotheques or bars you go to, you're not taking that with you. All you're taking with you is your karma. और बात यह है कि जब राजा की मृत्यु होती है या फिर किसी की भी मृत्यु होती है, तो आप न तो अपनी कार लेके जाएंगे, अपना बंगला, बैंक बैलेंस, सभी जो है एक ही चीज लेके जाते हैं, वो है अपने कर्मों को लेके जाते हैं। So it would behoove any sane human being to find out what karma is and what is the reaction to that karma. तो इस प्रकार से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा वो यही विचार जरूर करना चाहेगा कि कर्म क्या है और उस कर्मों का फल क्या होगा मुझे जो कर रहा हूं। So many people in position, we have royal family, we have kings now, right? You know, Bill Gates is a king in his own mind. तो जो लोग बड़े बड़े पोजीशन पे होते हैं वो सोचते हैं हम तो अभी बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, हम राजा हैं। बिल गेट भी सोच सकते हैं मन में अपने कि मैं भी राजा ही हूं। But they live very sinful lives. लेकिन पाप में जीवन वो जी रहे हैं। And they will face the reaction to all their sins in this life when they enter into their next life. और जो इस जन्म में पाप कर्म किए जा रहे हैं उनका फल उनको भोगना ही पड़ेगा अगले जन्म में। So never die. तो इसलिए राजा को कहा कि मरो नहीं, अभी तो भोग रहे हो, आगे तो फल पाप का मिलेगा तुमको, इसलिए मरो नहीं। So brahmacharis, we have this nice room of brahmacharis here. Die immediately. तो ब्रह्मचारी जैसे इस कक्ष में बहुत सारे
अच्छे ब्रह्मचारी बैठे हैं, वो क्या कहा? तुरंत मर जाओ। This was a different age. Don't die though. We don't want any of you dying. वो अलग समय की बात है, अभी मत मरना, अभी चाहते नहीं आप लोग मरे हैं। But the point was, right now you're following your Guru Maharaj, you're following Sampradaya, you're following the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam, the Bhakti Rasamrita Sindhu, the Upadeshamrita, so much nectar. You're living such a perfect life. You fill your whole day with that kind of life. You don't know what you're doing, but you're living a perfect life. लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी ब्रह्मचारी के रूप में आप अपने गुरुदेव का आदेश का पालन कर रहे हैं, संप्रदाय के आदेश का पालन कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत, भागवत, भगवत गीता, उपदेशामृत, इतना अमृतमय एकदम शुद्ध पूर्ण जीवन आप जी रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हम किस तरह आप अपने दिन भर जो गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम आदर्श जीवन आप लोग जी रहे हैं ब्रह्मचारी के रूप में। Because if you die, you go back to Goloka Vrindavan. बोल अगर अभी तुरंत ही आप मर जाते हो तो ऐसी चेतना में तुरंत भगवत धाम आपके लिए पक्का हो गया। So die immediately, but please don't do that. तो तुरंत मर जाओ ऐसा कहा, लेकिन आप मत मरना। Because you'll say, oh, Udayananda told me to die, so I jumped off. No, don't do it. Don't do it. बाद में आप बोलो उदयानंद प्रभु ने कहा था तुरंत मर जाओ तो छलांग लगा दो, ऐसा मत करना। Okay, the butcher, what's his instruction? Don't live, don't die. कसाई, इसके बाद कसाई को क्या आदेश दिया? न तो जियो न मरो। I don't know, but for me, whenever I see a dead animal, doesn't matter, it can be a dog even, right? Their carcass dead. It's very disturbing. मैं पता नहीं, मैं जब भी किसी मृत पशु को देखता हूं, भले ही कोई कुत्ता हो या ऐसा कोई निम्न पशु हो, तो बहुत उससे विचलित हो जाता हूं, बहुत दुख होता है। What to say, these beautiful cows and bulls out in the back of our temple, how they come up, Balaram comes up, big boy, so beautiful. तो फिर हमारे गौशाला में जो गाय हैं, बैल हैं, इतने सुंदर, उनकी क्या बात करें। इस तरफ बलराम है, मोटा तगड़ा आता है चलता हुआ, बलराम अपनी These monsters, butchers, they take weapons and they cut the throat of these beautiful creatures. ये जो शैतान हैं कसाई, ये अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके और अपने इतने सुंदर प्राणियों की गर्दन काट देते हैं। Heartlessly causing so much pain to these creatures that have done nothing to them. कितने निर्दयता पूर्वक और क्रूरता पूर्वक इन पशुओं को मारते हैं, जबकि इन्होंने कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ा है। As a matter of fact, those creatures have given them milk, butter, dahi, yogurt, so many milk products for the development of their bodies and for the enjoyment of their tongue. और अगर बात करें तो वास्तव में इन प्राणियों ने उनको कितना कुछ दिया है, दूध दिया है, मक्खन दिया है, दही दिया है, उनके शरीरों की पुष्टि के लिए और उनके जीव की संतुष्टि के लिए। So every person that is non-veg, I'm addressing them because all of you are all Krishna's devotees. Therefore, you would never hurt any cow or any chicken or any pig or any other obnoxious substance you get from a dead carcass. तो वो सभी जो मांसाहारी हैं, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप तो कृष्ण भक्त हैं और आप कभी भी किसी गाय या अन्य पशु को दुख नहीं देंगे अपनी जीव की संतुष्टि के लिए। You go to McDonald's, it's all nice little clean place. That is the butcher shop. That is the butcher shop. आप मैकडॉनल्ड्स में जाइए,
दिखने में कितना अच्छा जगह लग रहा है, लेकिन वो कसाई खाना है। God is called Govinda, one who loves and protects the cows. भगवान को कहते हैं गोविंद, एक वो व्यक्ति जो गायों को पसंद करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। If you kill the cow, you eat the cow, you are going to be responsible for the karma of being a butcher. तो यदि आप गाय को मारते हैं या गाय को मांस खाते हैं तो आप एक कसाई की श्रेणी में हैं। Therefore, it said, you butchers, you cow eaters, you flesh eaters, you can't run. You can try to run, but the karma will come after you. तो जो कसाई हैं या जो गौ मांस खाने वाले हैं, आप हो सकता है भागो फलों से बचने के लिए, लेकिन आपका कर्म आपके पीछे पीछे आएगा। They have a very high system of technology in Yamaloka. यमलोक में बहुत उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। They are recording every word you speak, every action you perform. जो एक एक शब्द आप बोल रहे हो, एक एक कार्य आप कर रहे हो, सब रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। So even though you can cheat maybe in front of some people, you can never cheat Yamaraj. हो सकता है कुछ लोगों को आप धोखा दे दो, लेकिन यमराज को आप कभी धोखा नहीं दे पाओगे। So don't live, don't die. इसलिए कसाई को कहा जियो मत अभी और मरो मत। Just the opposite of that is a Vaishnava. इसके बिल्कुल विपरीत है वैष्णव। Live or die, it doesn't matter. जियो या मरो, आपके लिए कोई अंतर नहीं है। Bhaktivinoda Thakur says, Vaishnavas die to live. And living, we spread the holy name around. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भक्त जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो नित्य जीवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और जब इस संसार में जीवित रहते हैं तो हरिनाम सबको बांटते हैं, सब पे कृपा करते हैं। Vidya vinaya sampane brahmana kavi hastani sune chaiva swapake cha pandita samadarshana. One who can see with equal vision a Brahman, a cow, a dog eater, all living beings. That is Pandita Samadarshana. एक व्यक्ति जो ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को या चंडाल को समान दृष्टि से देखता है, वही है पंडित। That is what a Vaishnava is. और वही है वैष्णव जो इस तरह देख पाते हैं। So these two sons of Kuvera, they have committed their lives to those of the degraded. तो ये जो दो पुत्र हैं कुबेर के, ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गर्हित अवस्था में पड़ चुके हैं। But as we pray every morning, Panchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisation to all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desire trees, Kalpavriksha trees. You can fulfill the desire of everyone, and you're full of compassion for the fallen conditioned souls. तो मैं इसका अर्थ बताया कि मैं उन सारे वैष्णव भक्तों को सारा नमस्कार करता हूं जो सभी की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं, कृपा के सागर हैं और पतित जीवात्माओं के लिए करुणा से भरे हुए हैं। So Narada Muni, he sees their condition. He says, stop going to hell, and I'm going to force you not to go to hell. तो नारद मुनि ने ऐसी परित अवस्था देखी तो नारद मुनि बोला, नरक में जाना का रास्ता तुम बंद करो और मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम नरक में न जाओ। So I am going to curse you. You want to be naked? You can be a tree. So trees are also naked. You can be naked.
तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नग्न रहना पसंद करते हो तो तुम पेड़ की योनि में चले जाओ। पेड़ भी नग्न ही रहते हैं। The difference is, Prabhupada says, the consciousness of trees is very dark, very low. They don't, it's not like when you become a tree, you're going, wow, I'm a tree now. I wish I could get some pakoras, but I'm a tree and I don't have a mouth. And no, you don't, a tree doesn't think like that. A tree is just sitting, Prabhupada said, very deep pain. They live in a very deep pain. They have to stand through the heat of the summer, through rain, wind, right? The tree is just standing there through all of it. People carve their names into them. We just sitting there, stand, right? That's the life of a tree. तो पेड़ की योनि, जब पेड़ भी नग्न रहते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है बहुत ही उनकी चेतना बहुत ही कम है। जिस प्रकार धूप सहन करते हैं, ठंड में खड़े रहते हैं, लोग उन पे अपना नाम लिखते हैं, ऐसा पेड़ कभी नहीं सोचता है कि अरे अब मैं पेड़ हूं, चलो पकौड़े वकौड़े कुछ खा सकता तो अच्छा होता था, मेरा तो मुंह ही नहीं है। नहीं, उनकी चेतना प्राय शून्य होती है। इतना पतित और इतना कठिन जीवन है पेड़ का। Nalakuvera in Manigriva had to retain the consciousness of demigods stuck in the tree. लेकिन नलकुबर और मणिग्रीव को उनकी जो देवता के रूप में चेतना थी वो उनकी बनी रही पेड़ की योनि में रहते हुए भी। And that was the merciful reaction of Narada Muni. और ये थे नारद मुनि की कृपा का परिणाम था ये। It would have been much worse, but Narada Muni is Kripa Sindhu, an ocean of mercy. उनके साथ और भी बुरा होना था दोनों के साथ, लेकिन नारद मुनि कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उन्होंने कृपा कर दी। Because in the end, Krishna, little Damodar, is going to pull that mortar between those trees and liberate them forever. और नंद महाराज के आंगन में वो दोनों पेड़ आए, क्योंकि अंत में कृष्ण जो हैं नंद महाराज के आंगन में ऊखल से निकलेंगे दोनों पेड़ों के बीच से और दोनों का उद्धार कर देंगे। Devarshi Narada Muni ki! जय। Okay, thank you very much. I don't want to take any more of your time. Is there any questions or? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका समय नहीं लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है कुछ या कुछ? You kind of went like this. Oh, there's one. Okay. Huh? So, is it the causeless mercy that Narad Muni give to Nalkuber or Manigriv, or is there any cause, like any past? That was causeless mercy. That was the mercy of a Vaishnava. Like, for example, I'm sitting here right now. तो प्रश्न ये है कि ये जो नारद मुनि ने कृपा की, ये क्या हेतु ही कृपा थी या पिछला कुछ ऐसा कुछ कारण रहा जिसके कारण ये कृपा की? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल अहेतु की कृपा ही थी, नारद मुनि की अहेतु की कृपा थी। No one deserves to see Krishna. No one does. I mean, in one sense, it is the eternal relationship between the soul, but it's not like in God. We are all parts and parcels of Krishna. We are meant to be with Krishna, but we really don't deserve because of our nonsense, because of what we've done here. जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठा हूं, तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कृष्ण को दर्शन करने की, हम लोग, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम कृष्ण के नित्य संबंध है, और हमारा उद्देश्य ही जीवन इसलिए है कि हम कृष्ण के साथ आनंदपूर्वक रहें। लेकिन हमने इतने कुकर्म किए हैं कि हमारे कोई योग्यता नहीं है कि हम कृष्ण का दर्शन कर पाएं। Krishna is all merciful, and the pure devotees are also all merciful, like Krishna. लेकिन ये कृष्ण की कृपा है, तो कृष्ण है कृपा मय है, और उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त भी जो हैं वो कृपा से भरे हुए हैं। So, like for example,
Managriva and Nalakovera were saved by Narada Muni, and I'm sitting here because I was saved by Srila Prabhupada. Causeless. I don't deserve to be in your association. I'm not actually worthy to associate with people from Bharatvarsha because I'm Malecha Chandala, low-life American, Caucasian. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इस विनोद भाव से कि मैं जो है जिस तरह नलकुवर मणिग्रीव को नारद मुनि ने बचाया, तो मैं भी आपके बीच बैठा हूं क्योंकि मेरे लिए प्रभुपाद ने मुझे बचाया। मेरा इतना कोई योग्यता नहीं है कि मैं भारतवर्ष के लोगों के साथ संबंध बनाऊं क्योंकि हम तो मलेच्छ देश से हैं। So you can see causeless. Not that my karma was that I should sit before you and speak, but by causeless mercy, Srila Prabhupada asked me to do this. So I'm doing it. And that's his causeless mercy. And now you should all do that to every other soul in the world. Give this causeless mercy. That is the mercy of Lord Nityananda. Causeless. Not that you, oh, he is qualified Brahmin, he's, well, no. Give it to all. Because just like we're like Mahanagriva and Nalokavera, we are also like Jagai Madai, right? We shouldn't be saved, but they're saving us. So we are very grateful. We don't want to question that mercy. Well, why are you saving me? Don't push the issue. They might rethink it. That's what I think. Somehow or other, I got this causeless mercy. So I'm taking it. तो जिसे मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, उसी के कारण मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और उसी तरह आप सबका भी यही कर्तव्य है कि आप भी इस संसार के हर जीवात्मा तक इस संदेश को पहुंचाएं, और उसी के माध्यम से तो ये उनकी हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है ना। इसलिए हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अहेतु की कृपा क्या है। यदि ज्यादा प्रश्न करेंगे तो हो सकता है वो दोबारा सोचने लगे। तो इसलिए अगर अहेतु की कृपा मिली है तो उसको आप एकदम उसको ग्रहण कीजिए, और ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा है, तो इसको हमको सब तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण। Anyone? Anything else? और कुछ? Srila Prabhupada ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande. His Grace Udayananda Prabhu ji ki jai। So